तो कुछ ऐसा नज़ारा था टेंट साइट का। ये मेरा कैंप पटामेक रिवर और ये है कैंप साइट। कुछ लोगों ने और भी टेंट लगा रखे हैं और इधर पंप वगैरह है पानी के लिए और एक टेंट उधर लगा रखा किसी ने और काफ़ी स्पेस है वैसे। ओके, रेडी टू गो। एवरीथिंग इज पैक्ड अप and now I think it's about 7 o'clock and leaving this nice site and heading 63 miles today. Okay, good morning, Ram Ram to everybody. और अभी बजे हैं 7:30 7:30 a.m. and now starting at point 62.9 miles. That was the campsite, almost 63. So 63 more miles to go today. Then that will be mile 0. So it's a 184.5 mile towpath, like this, the way it is. It's beautiful here. There's a river around this side and there is canal here. Not a canal anymore. It's just abandoned area, jungle. But towpath is maintained for hikers and bikers. Lots of people do hiking and some people do biking like me. I enjoy both. I think I like it. This is good. It was tough for me though. I wish I could do it in slow pace, like maybe 20 miles a day. Not 60, not 70. But that will be after many years. So for the time being, it's okay 60 miles. Yesterday I did 70 miles almost. 66 I think. I don't know. I have to calculate. But it's more than that because there was a detour, and then detour was kind of like there was some part broken and then they had to take you on the road and then bring it back same place. So that 4 or 5 miles you rode on the road is waste, or at least is not counted for you. So that's why I'm saying it's more mileage yesterday. And it's a sunny day. Nice sunny day. It looks like this. This is log number, let's see. Log number 36. And here we go. It's a sunny day. Nice sunny day. And the perfect weather cooperated with me. Otherwise, I don't like is when there is rain. Even if it is little rain, this towpath becomes muddy very fast and there are puddles. And you cannot avoid them. 99% your panniers will be bad. They'll be dirty in the mud. And then this is interlock 3 and कुछ नज़ारा लेते हैं यहाँ पे कैसा है. Let's see how it looks. So this area is Harper's Ferry, maybe 2 miles north of Harper Ferry in West Virginia. That's a historical town. And oh, there are lots of tent sites. I don't know whether you can see it on the other side of the river, West Virginia side. So there are campgrounds there too. So both the states are using the riverfront as much as they can. This looks good.
एक हिरन खड़ा है, पानी पीने के लिए आया हुआ है। हाँ, अब चला ये। तो कुछ ऐसा नज़ारा है पोटोमेक रिवर का, और पानी उधर से आके उल्टा आ रहा है और फिर वापस इधर सीधा होके जा रहा है। तो बीच में कुछ ऊंचा एरिया है टापू जैसा, और वो हार्पर्स फेरी है आगे 2 माइल 3 माइल पे, मे बी 2 माइल ना हो। तो चलो ठीक है, इसी पे कुछ da 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 तो खाली है बिल्कुल सुबह सुबह। थोड़ी देर बाद हार्पर फेरी के पास, हार्पर्स फेरी जो है हरदीप की फेरी, कोई छोटा टाउन, पहले अब ये हिस्टोरिकल टाउन है, and it used to be it's famous for, I think it's known for, this is mile 62। तो किसी बंदे ने, हार्पर्स नाम के बंदे ने चलाई होगी फेरी कभी यहाँ पे रिवर को क्रॉस करने के लिए, that's why maybe it's known as हार्पर्स फेरी। और उसके बाद टाउन बस गया। एंड उसके बाद एक इंसिडेंट हुई थी यहाँ पे जब सिविल वार के टाइम पे, तो उसके लिए भी थोड़ा फेमस है। यहाँ पे किसी को फांसी पे लटकाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, एंड देन कोई रिवोल्यूशनरी था। और अब ये टाउन सिर्फ रेस्टोरेंट्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं थोड़ी, उनके लिए फेमस है और कुछ नहीं है। अदरवाइज पीपल कम देयर टू जस्ट। तो चलो, बाय बाय। तो दिस इज़ हार्पर्स फेरी टाउन, इधर लेफ्ट राइट में, और ये टोपैथ। हेलो, गुड मॉर्निंग। और ये सारे हाइकर्स सुबह सुबह, दिस इज़ द राइट टाइम टू हाइक मैरीलैंड हाइट्स। It's pretty nice trail up there, so people are going there right now. It will be crowded soon. This is not far from DC, so lots of people who live around, they come and ये ऊपर वहाँ पे you can go. That's the Maryland height, and from there you can see the town. It's a nice view from there. Let me show you for a minute. Stop it here for a minute. So that's the Maryland height up there. पता नहीं कैसा व्यू दिख रहा होगा। It's a rocky area. Lots of people go there early morning to hike. It's a nice hike, and that's the Harper's Ferry town. It's a historical little town, and it's famous for restaurants nowadays. So people come for hiking and then they go for restaurant there. तो ऐसा कुछ एरिया है। अब यहाँ पे बैठ के मैं आई थिंक चाय पीऊँगा, चाय बनाता हूँ, एंड दिस लुक्स लाइक ए गुड लोकेशन। अब जब तक टी बन के तैयार होगी तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, एंड देन फिर चाय का मज़ा लेंगे पार्ले जी के साथ, और फिर चलेंगे कंटिन्यूइंग द जर्नी। 56 more miles to go
and weather looks perfect. It's good weather and tea must be almost ready. It's very handy, this stove. हेलो। तो भाई अब क्या हुआ आज, अभी एक तो मच्छर बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। कुछ एरिया हैं जहाँ पे ना मच्छर कुछ ज़्यादा ही हैं, तो वो सीधे आँखों में, नाक में, मुंह में घुस जाते हैं अगर मुंह भी खुला है तो अदरवाइज इट्स वेरी नाइस वेदर अपार्ट फ्रॉम दैट, सो कैन नॉट कंप्लेन एनीथिंग। आज एक बात हुई कि थोड़ी 5-10 माइल पहले व्हाट हैपन कि आई वाज पासिंग द डिट्यूर, और उसके बाद जैसे हुआ तो बहुत साइकिल स्लो हो गई। तो मैंने देखा अरे ये क्या, मतलब इतना स्लो कैसे हो गई, तो गियर वेयर चेंज किया। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान से देखा तो मतलब ज़ोर ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने कहा ये तो फ्लैट ही है, अभी चढ़ाई तो नहीं है। तो ध्यान गया टायर पे, तो उसकी हवा धीरे धीरे कम हो रही थी अगले टायर की। तो मैं रुका, तो मैंने हाथ से हवा दबा के देखी तो इट वाज वेरी लो। और तो मतलब तो मैंने कहा ये क्या हुआ यार, ये तो पंचर हो गया या कुछ वाल्व ख़राब हो गई। तो अब फर्स्ट टाइम मैं बाइकर, और फर्स्ट टाइम ये बाइक भी फर्स्ट टाइम अभी थोड़े दिनों पहले लेके, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट विल हैपन, बट इट डिड, सो यू नेवर नो। तो प्रिपेयर तो मैंने किया था इसके लिए। तो आई हैड ए पंक्चर किट एंड ए पंप विद मी। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये तो अच्छा है कि पंक्चर किट ली थी। बट यूजली दे रिकमेंड कि यू ब्रिंग 1 or 2 एक्स्ट्रा स्पेयर टायर ट्यूब, not tire but at least tube, so that you don't have to worry about puncture and all that. You don't have to fix it there. It will be quicker just to replace the tube, and tube is not that expensive. So that's what I was planning to do. But what happened, now I did not have the tube yet because I was not expecting कि ये भी हो जाएगा। तो पंक्चर का सामान तो था मेरे पास, बट ट्यूब मेरे पास नहीं थी। तो देन आई कि चलो भाई टायर उतारा, और टायर तो जल्दी उतर जाता है इसका। तो टायर क्या है इसका, लेट मी शो यू। इट्स वेरी इजी टू चेंज द टेक आउट द फ्रंट टायर। तो फ्रंट टायर में ये जो है ना कुछ इस तरह से है, इफ़ यू कैन सी। तो ये क्लिप से उतर जाता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नट एंड बोल्ट, हाथ से ही उतर जाता है। तो टायर उतार लिया, उसके बाद मैं बैठा था तो टायर का तो एक बाईसाइकिलिस्ट आके रुका और उसने कहा कि व्हाट हैपन, आर यू ओके। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने बताया उसको कि पंचर हो रखा है एंड आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट, आई हैव द स्टफ। तो कहता हो आई कैन फिक्स इट फॉर यू एवरीथिंग। एंड वो थोड़ा एक्सपीरियंस लग रहा था, और वो रुका और उसने, मैंने कहा ठीक है, दैट विल help me, kind of like I want to learn too. Maybe I have fixed tire about maybe 40 years back in India, but not here recently, so might have something changed, or maybe there is a trick. तो कहता कि you can use my tube, and he was such a nice guy. And मैंने कहा ठीक है, I can pay you the tube and maybe I can replace the tube. That's another way if we cannot find the puncture and we cannot fix it, but otherwise I have the puncture kit. But he was such a nice guy, he offered his help, and he was going from DC to Pittsburgh, which is 7-8 days, and he stopped. And फिर उसके बाद ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि we were able to find the puncture and we fixed it because I have the puncture kit तो थी मेरे पास। तो but it was a very nice gesture of him कि he offered the tube and I was ready to pay him, and he said कि नहीं पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। But ठीक है, it was good कि it worked out and we did not have to have his tube because he is going to Pittsburgh, which is like he might need it. So lesson learned, better carry 1 or 2 spare tubes, so it's like then you don't have to worry about finding the puncture, because पहले वो पानी में डुबा के पंक्चर पता करते थे, तो दैट्स द वे आई न्यू। बट यहाँ पे पानी उस टाइम कहीं पे नहीं था, इवन दो आई एम वेरी क्लोज टू द रिवर एंड कैनाल, बट लाइक इट वाज नॉट वेरी एक्सेसिबल। तो मतलब इट वाज नॉट दैट इजी। तो मैंने फिर वहीं पे हमने पंचर पता किया उसने आवाज़ सुन के, एंड देन वी फिक्स इट, एंड ही वाज सच ए नाइस गाय। और एक और बात नोट की
कि यहाँ पे जैसे कि जो भी साइकिलिस्ट पास कर रहा था हमको, खास करके जो लंबे रूट के बंदे थे जिनके पास कुछ सामान था, दे वर ऑलवेज आस्किंग लाइक व्हेन एवर दे सी समबडी स्टॉप्ड, तो जैसे मैं बैठा था एक जगह तो, या फिर हम दोनों फिक्स कर रहे थे, तो देन दे विल आस्क आर यू ओके, डू यू नीड एनी हेल्प। तो हेल्प करने के लिए बंदे बहुत तैयार थे और दैट्स अ गुड थिंग, and it was such a nice gesture of that person, whoever he was. I did not ask him his name, he did not ask my name, we just chatted a little bit, but इतनी देर में यही बातें होती हैं, ज़्यादा पर्सनल बातें तो नहीं कर सकते कि क्या है कौन है, and but he was a nice guy and I really thank him कि उसने पंचर लगाने में, मतलब इट वाज पंचर मैं भी लगा लेता बट एट द सेम टाइम मोरल सपोर्ट, और उसने तो काफ़ी हेल्प करी, और उसने बल्कि उसी ने लगाया पंचर, मैंने तो सिर्फ बैठ के देखा ही था। आई वाज रेडी टू हेल्प वट एवर ही वांटेड, बट ही डिड हिमसेल्फ बिकॉज ही न्यू, जैसे होता है ना कि ही वाज लाइक वेरी, क्या बोलते हैं, वेरी एक्टिव, कि वही कर रहा था सब कुछ काम, तो he was not letting me do anything, और जैसे मतलब he knew like जल्दी से कैसे करना है, तो he was very helpful. Thank you whoever you were, thank you, nice gesture. That's a nice old building and it looks like a stone building and it's pretty good. I don't know what that is, but it's on the canal. This side is canal, this is towpath, and that side is river. So it is something old because now they don't allow anything to be built on this kind of location in between canal and the Potomac River. So this looks pretty good. Something is working there. Maybe some church. But it looks pretty old building. It's a stone building. This is historic White's Ferry. तो जैसे हार्पर्स की फेरी थी उसी तरीके से वाइट्स फेरी, तो ये फेरी चलती थी इधर से रिवर को क्रॉस कराने के लिए पुराने टाइम में। 30 miles to go, 30 more miles, that's it, and then I will be done, hopefully in next few hours. And that's Potomac on the background, and this is 30 miles to go, and this side I'm going. Let's go! Almost done. Another campsite, Horse Pen Branch, and this looks pretty good. And this is water pump and pretty flat area, many spaces for campsites, and it has as usual restrooms and a bench and few places for the fire pit. Not so great view of the water because water is just behind this, but not a great view, but I think it's pretty okay. So, and it's very close to the town. It's about 26, in between 26 and 27 mile from DC. So this is pretty good. ये है almost 20 mile marker. The canal is very clean here and people are boating. So you can see people are canoeing and kayaking. So that's a good use of the canal. And here is the river, the Potomac River, and the view is good. 20 mile marker, that means 20 more miles to go before I reach mile marker 0. That's in Georgetown, Washington DC. So it's not far anymore. 20 more mile, and this is how it looks like. And let's go. This is the lock, and this one is locked right now. If you see, doors are closed and water cannot pass through. Only it can overflow that.
or maybe here, this one, which will end up in the river. So they can maintain the water level. It's a kind of dam, temporary dam, which they can open and close. So this is a lock in old style. Now they have dams for this. And this lock is closed right now. It can be opened. So let's go. हिल ही नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल तो रहा है कभी कभी, नॉट वेरी मच। चलो क्यों डिस्टर्ब किया बेचारे को, इसका डिनर का टाइम हो रखा है तो मछली ढूंढ रहा है ये। चलो नहीं डिस्टर्ब करते, चलते हैं। नहीं मान रहा बात, ये हिल भी नहीं रहा। तो व्यू कुछ ऐसा है after I think about 14 mile mark, so or in between 14 and 15, and this is very rocky here, and this is some old boat. I never expected this kind of view 14 miles away from Washington DC. This is cool. And this is Potomac River, and this is the canal, and canal is stagnant water or it's moving, maybe it's moving, and this is very rocky here, and it's maybe 100 feet down. Okay, 10 more miles to go. That's it. I started at 3 digits. That's a 184.5 miles. That's where I started in Cumberland. And now it's 2 digits. And soon it will be single digit. And then I will be done. And this is just 10 miles left. I'm glad I did it. Almost there. See you there at 0 mile. Bye bye. तो टोपाथ अभी कुछ ऐसा है, ये डीसी से 5-6 माइल दूर है, और डीसी के अंदर ही है लेकिन सेंटर से 5-6 माइल दूर है। तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है यहाँ पे, बट अभी तक तो नेचुरल वैसा ही लग रहा है, टोपाथ जैसा होना चाहिए। और ये पुराने टाइम का, इसमें वही लॉक नंबर 6 हाउस, और ये साइन देखा आपने स्लीप हेयर, तो ये आई थिंक रेंट भी करते हैं अब इसको, जैसे रेनोवेट कर रखा है, तो यू कैन रेंट इट एंड यू कैन लिव। तो काफ़ी ये साइन पहले भी देखा था मैंने, लेकिन यहाँ वाला तो अच्छा मेंटेन कर रखा है, उसके ऊपर कलर भी कर रखा है। और दिस इज़ प्रीटी क्लोज टू डीसी एंड यू कैन रेंट, आई थिंक इट्स रेंटेड राइट नाउ, समबडी इज़ लिविंग देयर, तो इट्स यू बीइंग यूज्ड एज ए होटल। एंड थोड़ी देर बाद ये टोपाथ बिल्कुल डाउनटाउन जॉर्ज टाउन में पहुंचेगा, तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। दैट्स नाइस व्यू। हेलो, that's the good use of canal. This is mile 2, और this is mile 2, and टोपाथ की कुछ हालत ऐसी हो गई है, इट्स जस्ट लिटिल बिट लेफ्ट, थोड़ा सा बस है, बराबर से इधर की रोड निकाल दी है, और ये इधर से हाईवे जा रहा है। सो दिस इज़ just 2 miles left and then it will finish. So
So after 2 miles, towpath ends. तो कुछ मिनट अभी माइल 0 ढूंढ रहा हूँ मैं, और कुछ देर पहले 1 माइल तक तो ऐसा नज़ारा था C&O कैनाल का, और अब कुछ ऐसा है। ये मेन DC डाउनटाउन है, और इन होटल्स के पीछे जाके शायद माइल 0 है।